Same protocol, same protocol working on the slip disc. What we are talking about suppose we told that lingo is working for the lumbar for whatever means, whether the disc bulge or it is the problem of other like the slip disc and all. Okay, so now, okay, you are telling I will discuss one more thing. If you remember, I discussed bulging of disc. Sir. Yes, sir. Yes, sir. So now I will revise, then I will tell you if the bulging of disc increasing, then it becomes slip disc. Then how to treat it? So first you have to see the disc bulge. पहले आपको डिस्क बल्ज दिखाते हैं. So if you see this image, देखो प्रणाम कुछ भी हो, whether the lumbar spinal stenosis or the slip disc or the disking bulge disc, when we are talking that lingo will work on L4, it means it will work all the problem of L4, right? So first you look at this structure of the disc. So we can see here this is the vertebra, and this is the disc made by two structure. The central is nucleus, that is called nucleus pulposus. इसे हम कहते हैं अंदर के स्ट्रक्चर को nucleus pulposus. And the structure around it is called annulus fibrosis. The annulus fibrosis, the boundary around, जो चारों तरफ की बाउंड्री है ये काफी मजबूत होती है. It's a very strong boundary. The boundary around, it's a very strong boundary. Annulus fibrosis. But suppose sometime what's happening? Some tear and wear is happening. Then the disc is going like this, but still in the boundary. कि डिस्क बाहर निकलने की कोशिश तो करती है लेकिन अभी भी बाउंड्री में होती है. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऐसे किया, आप देखिए हवा अंदर ही है, स्टिल इट्स ट्राइंग टू क्रिएट द bulge in on the cheeks, लेकिन अंदर ही है. In the same way, disc is creating the bulge but still inside. That is called disc bulge. But when a tear, then it's called herniation or the slip disc. Let's see this image. Now look at this image. So when it's a tear and the outer boundary is breaking, then it's coming out and doing the compression on the nerves. Then we are telling it herniated disc. तो हम इसे क्या बोलते हैं? herniated disc. अब कैसे ठीक करोगे? How will you work on that? Now we can see here. So we are looking the spine from the back side. The person is having herniated disc on the right side, so will be paining on the right side. Now, how to treat it? हम इसका इलाज कैसे करेंगे? That is the question. So for that, I already told you one point, but I will repeat that point and I will add few more points for the disc bulge and as well as for the herniated disc. The point number one, which is very much important, we are putting the needle, two needle here, lingo davai,
lingu one needle here on the SI4 and 3 needle here. 1, 2, 3. एक यहां पर लगाई, एक यहां पर लगाई और 3 needle ऐसे लगा दी. Excellent product. How many needles? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 1 needle here. 6 in the SI4. Very wonderful protocol for the disc bulge, even for the herniated disc. ये बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल है. It will suck the disc inside. ये वापस जो डिस्क खिंच गई है, निकल गई है, उसे रिलोकेट करने में मदद करेगा दिस प्रोटोकॉल. So this is one of the great protocol. It is called Sancha E, Sancha R, Sancha Sun. If you want to see the 30-minute video, अगर आपको इसका एक 30 मिनट का वीडियो देखना है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन. So the detailed explanation of these points, I have one video. Okay. Shall I put in the group? You will see. Okay, let me put immediately. So bundle group. Spine group. अभी मत देखना, अभी क्लास के बाद देखिएगा, ठीक है? Yeah. Spine. Done. So this is the protocol number 1, which is very much effective. दर्द कितनी देर में कम होगा? It will release the disc, remove the nerve compression, and patient will be feeling pain relief within few minutes. Just within few minutes. Maybe 30 seconds, maybe 5 minutes, but not always. कभी कभी बीच में आपको चैलेंजिंग पेशेंट मिलेगा ही. Whatever you do, one patient will come you and giving you challenge, then you have to again scratch your head. So whatever is happening, whether the slip disc creating sciatica pain, lower back pain, because of the nerve compression, if there is a heel pain or knee pain, we can work. We have to put the point on the opposite side. Very effective protocol. These 3 points are called Sancha E, Sancha R, Sancha Sun. This middle point also good for knee pain. ये हमारा जो मध्य का बिंदु होता है, वो घुटने के दर्द पर भी अच्छा काम करता है. So now a very effective protocol. Because this is a very much effective protocol, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल लगाते रहते हैं. पूरे कोई भी पेशेंट कमर पे हाथ रख दे, बस यही प्रोटोकॉल लगाते हैं कई सारे थेरेपिस्ट, because this protocol that much effective. And you can do some experiments. What is the experiments? Okay, put the one needle like this till here, here and here. Sometimes you can put the needle like this. Sometimes you can put one needle here, 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 one needle. Do various experiments. You will see many excellent miraculous results. Very effective. And I am sure that श्वेता जी ने किया होगा और ट्राई किया होगा, और किस किस ने ट्राई किया है? सुकृति जी ने किया है, सरब जी, श्वेता जी आपने तो किया होगा, ट्राई किया है. मनिंदर जी आपने किया है पॉइंट ट्राई? अरे इतना इफेक्टिव पॉइंट ट्राई नहीं किया अभी तक, कहाँ थे अभी तक? तो जरूर करना चाहिए. आपने मैत्री जी ट्राई किया है पॉइंट? रियली इट्स अ वेरी इफेक्टिव पॉइंट, यू शुड ट्राई. ऋचा जी किया आपने?
वेरी गुड, ऋचा जी ने किया है। पवन जी आपने करना है, प्लीज, एवरीवन हैज टू पुट दिस पॉइंट, दैट मच इफेक्टिव. Patient will be coming with a pain, you put the needle, pain gone. Patient will smile, thank you doctor, you are magician. Patient will tell you, okay. So it's a very effective point. Sometimes what happened, okay, we are putting this point, then don't put any other point. कोई भी पॉइंट मत लगाना फिर, ना पैर में, ना दूसरे हाथ में, ना सिर में, कान में, कहीं भी नहीं. Otherwise, sometimes what happened, okay, you are putting the more point, the effectiveness will reduce, right? हाँ, ये कहाँ काम करता है? शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने वाला पॉइंट है, बट स्पेशली फॉर स्लिप bulge disc and the herniated disc. Now the point number 2 for the herniated disc and the disc bulge, that is, look at here. अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, वो भी बड़ा इफेक्टिव है फॉर द डिस्क बल्ज and even the herniated disc. So 88.11121314, yesterday I told you the point located in the thigh, do the massage on the point. कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था एक थाई का, क्या आपको ध्यान है? कल मैंने एक वीडियो दिखाया था, कल मींस in the previous class, the person is having lower back pain, so 3 point in the thigh, they are called upper 3 yellows. If the pain in the right side, do the massage of the left thigh. If the patient is having left pain, do the massage on the right thigh. Remember, the point name is 88.121314. इसका भी वीडियो भेज दूं आपको अगर याद नहीं है तो, भेज देता हूं. This point is called 88.121314. इसे कहते हैं हम अपर 3 येलोज. अपर 3 येलोज, very effective. I'm sharing this video to in the group and see quickly here. यहां पर मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं, वैसे दिखा चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए. ये देखिए, बल्जिंग डिस्क और स्लिप डिस्क के लिए बेहतरीन वीडियो है, अमेजिंग वीडियो. From the midpoint of the knee, if we follow this line, this is the liver meridian. Or we can go in another way. This is the gallbladder 31. If we go just opposite to gallbladder 31, this is the liver meridian. We have 3-point unit here on the liver meridian. The name 88.12, 30, 40, 88.12, 13, and 14. So now, first what we'll do, we will put a 1 point at the level of gallbladder 31, but just opposite side. Okay, so this is the first point at the level of gallbladder 31, just opposite side. And 2 point, we will put 1 point 3 chun down and 1 point 3 chun up. So these are the 3-point unit. These points very wonderful for liver. Number 1, if someone is suffering with fatty liver, with cirrhosis of liver, with any condition of the liver, hepatitis, hepatomegaly, very worst condition of the liver, these are the wonderful upper 3 yellows. Second, if you put point here, this will cure the back pain of the opposite side. If you point here, this will work on the back pain, this side. So these points are very good for back pain. Okay, this much enough, because right now we are focusing on the back pain. Very wonderful. Got it? So when the person is coming with a complaint of slip disc or the herniated disc or the disc bulge,
you can put these 3 points. Suppose in the sitting 1, you have put this point. Then doing the 1 day break. In the second sitting, you can put these points, 3 points. Okay, so where to put the point? I have mentioned here, we can put the point where the pain is, you can put violet, you can put the opposite side. आपको opposite side में लगाना, but sometimes you don't know. In the X-ray or MRI, you can see the disc bulge, but the person is not complaining about the right or left. Then put bilateral. You can put this point bilateral, or if you are also doing little bit massage, you can perform the massage in the inner thigh region. Bilateral. Generally, cupping in the inner thigh is very painful. If the person is suffering with the lower back pain, the cupping will be very painful. So patient might not be comfortable if you do cupping here. So do the massage or put the needle. The pain is the right side, left side, or the center. You can put the needle. If in the center, you can put bilateral needle. अगर दर्द बीच में है तो भी bilateral आप लगा सकते हो, right? So this is the first point we have to put for disc bulge or the herniated disc. When the disc bulge is happening, see bulge. What is the meaning of bulge? Bulge means something is moving out. कोई चीज अपनी जगह से move out हो रही है. कोई चीज बाहर कब निकलती है? Because of air, because of wind, because the wind is having nature to take the thing from one place to other place. ये विंड का नेचर होता है, हवा का नेचर होता है. क्या नेचर होता है? कि वो चीजों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाती हैं. The wind take the things from one place to another place. In the body, if there is too much wind, it will create herniated disc. So the 88.121314 are the point on the liver meridian, and we know liver meridian is the Wood meridian. So these 2 points are balancing the wind. We can arrest the wind. अगर हमारे शरीर में विंड बढ़ेगी तो क्या कर सकती है? अगर हमारे शरीर में विंड बढ़ेगी, अब बताइए कि आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, तो क्या करेगा? वो चीजों को इधर से उड़ाकर उधर ले जाएगा, उधर से उड़ाकर उधर ले जाएगा, चीजों को अपने स्थान से हटा देगा. So we are telling the cause of slip disc is increased vata or the wind. With the help of 88.121314, we can decrease the vata. Needle हम 1.5 चुन तक भी लगा सकते हैं और या 1 चुन भी लगा सकते हैं. Okay. But after that, we have to put 2 point. हमने ये कर लिया. So remember one thing, formula number 1, put the needle on the opposite side. The formula number, put the needle bilateral, a pain in the center. Clear? This much clear? Now, this much is not enough. ये तो हम परसों भी समझ चुके हैं कि डिस्क बल्ज के लिए आपको 88.121314 लगाना चाहिए. Now I want to inform you, this is not the complete treatment. We have to add few more point. हमें कुछ point और भी add करना होंगे. उसे हम कहते हैं, these points are located in the feet. Let's see here. हमारे पैरों के तलवे में कुछ बिंदु पाए जाते हैं. Look at in this image. So now we are doing the imagination of entire body here. हम संपूर्ण शरीर की कल्पना यहां पर कर रहे हैं. Right? So this is the front and back head region. This is the arm. Then we can see here we have lower back.
even the abdomen. So we are going to put the point here. हम point कहाँ लगाएंगे? We are going to put the point in this gap and in this gap. हम यहाँ पर बिंदुओं को लगाएंगे in this gap. So the both point will be on the same level. दोनों point same level पर होंगे. So we can tell in this way. So the point number 1 will be 2 chun away. The point number 2, 1.5 chun away. But the both point will be on the same level. Right? हमारे दो पॉइंट है. हमारा एक पॉइंट ये 2 चुन की दूरी पर होगा और एक पॉइंट 1.5 चुन की दूरी पर होगा. बोथ पॉइंट ऑन द सेम लेवल. So this point can be measured with the help of 3 fingers. 1, 2 and 3. 2 chun. And this is called 55.04 and the 55.05 point. इन दोनों को हम कहते हैं, they are the wonderful point for the disc bulge. We can put bilateral. इसका भी वीडियो भेजूं क्या? याद है? आप बोलते बस ये सब. इसका तो वीडियो मैंने पूरा दिखाया था आपको. 55 यूनिट्स का वीडियो मैंने आपको दिखाया था. आपको याद नहीं है? ये याद है बताया है. Now sometimes it's very challenging. कभी कभी बड़ा चैलेंजिंग होता है पॉइंट, क्योंकि इस पर दर्द होता है. If you put the point, patient will not come on the second day. Then we can do acupressure. है ना? क्योंकि पॉइंट कितना भी इफेक्टिव हो, लेकिन पेशेंट आना तो चाहिए अगले दिन. So there are many effective points, but we can't put all the point. Like 2 needle here, 2 needle in another leg. As soon as you remove the needle, patient will decide in that for 30-40 minutes, from tomorrow onwards I have to go somewhere else. तो भैया थोड़ा सा संभल के. तो एक्यूप्रेशर कर देना. जो पेशेंट सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, still you have not created enough rapport, do the acupressure here for give the 5 to 10 minutes and do the proper acupressure here and do the point on the opposite side or bilateral. Point को opposite side में लगाना है या फिर bilateral लगाना है. So these are the second point for disc bulge. The third and the last point which I will want to discuss with you, हमारा जो तीसरा बिंदु है उसे हम कहते हैं EOP. EOP का मतलब क्या होता है? Let's see here. EOP का मतलब so from the occipital area, if we are going 2.5 chun up, अगर हमारी हेयर लाइन से हम 2.5 चुन ऊपर जाते हैं, फ्रॉम द हेयर लाइन वी आर गोइंग 2.5 चुन अप, वी आर गेटिंग वन protruded part here, that is EOP, external occipital protuberance. External occipital protuberance. इसको निडल लगा देना है या मसाज कर देना है. इतना करना है बस, इनफ. Sometimes it's enough, sometimes you have to think more for the disc bulge. So how to go to the EOP? If we can go in that way. So we can keep the 4 finger on the bottom. हम 4 उंगल रख सकते. We are keeping 4 fingers on the where the hairline is starting. So we are keeping 4 fingers. So now below the uppermost finger, ये सबसे ऊपर वाली उंगली के नीचे यहाँ पर हमें एक उंगली गांठ मिलेगी, प्रोट्रूडिंग पार्ट मिलेगा, that is EOP. It is clear? EOP को ढूंढ लेंगे. कहाँ से ढूंढना EOP को?
कहां से टूटना है? फ्रॉम विच पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट द फिंगर? जहां पर हमारे यहां पर बाल पोस्टीरियर हेयर लाइन से। यस, वेरी गुड। जहां तक हेयर जाते हैं वहां से नहीं, जहां पर हेयर लाइन है वहां से। तो वहां से ऊपर जाना है। कई बार क्या होता है ना कि कई मेल्स की हेयर, मतलब थोड़ा फीमेल्स को तो लंबे बाल होते हैं, उनको समझ में आता है कि वहां से तो कोई जाने का मतलब ही नहीं है। अभी एक पार्टिसिपेंट ने क्या किया कि उसके थोड़े बाल लंबे थे तो वहीं से नाप रहा था, यहाँ तक बाल थे उसके। आप समझिए कैसे मिलेगी यूपी? ऐसे ना, बाल यहाँ तक थे। और मुझे पूछा यहाँ तो कोई प्रोटीजन नहीं है। सो वी हैव टू मेजर फ्रॉम द पोस्टीरियर हेयर लाइन, that is the EOP. EOP is very good for lower back pain. As per the skull acupuncture, spine starts from here and ends on EOP. The imagination number 2, spine start from here, from the anterior hairline and on the posterior hairline. हमारी पूरी की पूरी स्पाइन ऐसे आती है, सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacrum, and where hair ends, where there we have tailbone. तो ईओपी पर हमारा लंबर सैक्रल एरिया, लंबो सैक्रल एरिया, इट्स अ वेरी गुड फॉर लोअर बैक पेन एंड इवन द फॉर द डिस्क herniation. So how many points we have treated for the disc bulge? Number 1, 88.121314. We can choose any 2 point out of 3. It's not always necessary to put all the points. ऐसा मत सोचिए कि आपको हमेशा तीनों की तीनों लगा देना है. And then second point, under the feet. Third point is, you can also do massage on all the points if you don't want to put the needle. Is it clear? So I have discussed for herniated and the disc and the bulging of disc. Is okay? Can I proceed ahead now? So now I am going to discuss about the scoliosis. अब मैं आपको scoliosis के बारे में बताऊंगा. What is scoliosis? Scoliosis क्या होती है? आपने कई लोगों को देखा होगा ना ऐसे टेढ़े होके चलते हैं. Have you seen many persons? Like if you put in the Google, you will find many images. Scoliosis. There are many types of the scoliosis. Scoliosis. Look at this image. Scoliosis in the thoracic region. So it's curving on the side. Scoliosis in the lumbar region. Scoliosis in the thoracic as well as the lumbar region. And combined scoliosis. One is going this side, one is going this side. The meaning of scoliosis कि जब आपकी स्पाइन एक तरफ चली गई है, where your spine is going on one side. If you want to go in the deeper anatomy of scoliosis, then what is happening? It starts from very single point first. पहले एकदम single point से start होती है. For most of the person, it starts from thoracolumbar junction. T12L1. T12L1 and L2 are the most sensitive area for scoliosis. हमारे T12, L1, L2, लेकिन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है. मैं बता रहा हूं कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, द मोस्ट प्रोबेबिलिटी
एंड स्कोलियोसिस इज हैपनिंग इन मल्टीपल वर्टिब्रास, एक में नहीं हो रही है. इट्स नॉट लाइक L4, it's not like L5, it's not like T1, T2 or T11, it's in the multiple vertebra, right? तो क्या होता है स्कोलियोसिस में? The multiple vertebra are turning on one side. Okay, that's we can see in this image. The multiple group of the vertebra are turning on one side, so on one side it will become convex, other side it become concave. एक तरफ ये हो गया कॉन्वेक्स और दूसरी तरफ हो गया कॉनकेव, right? So now we can see here, we are knowing that the many ligaments are between the two vertebrae. Okay, कई सारे लिगामेंट होते हैं इन वर्टिब्रास के बीच में. तो होता क्या है आखिरकार? एक चीज और भी होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. अब आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भूल जाना, कुछ इतना जरूरी नहीं है, बता देता. So now what's happening? So suppose one person is turning on the one side like this. Scoliosis. So person will be walking like this. Actually, this is also, I'm not doing a proper way. You can see the scoliotic patient. You can see the clearly curved spine. Sometimes scoliosis is very little. We are many students here. We measure spine of each person. Some definitely will be having little bit scoliosis. Maybe very little. So what we are doing, we are taking one thread, we are keeping on the upper part of the spine and the lower part of the spine, and we are looking, okay, whether the spine is straight or not, right? If the spine is not straight, turning on one side. So what's happening? What I want to tell you here. So when the vertebra turn on the right side, जैसे कि क्या हुआ कि स्कोलियोसिस अभी हो रही है. So vertebra is turning on one side, either right or left. Let's consider the right side. तो वर्टिब्रा जब ऐसे जाती है तो ऐसे, right? But the ligaments are not allowing this vertebra to go to the wrong posture. So what the ligaments doing? So when the vertebra go to the right side, then the ligament trying to pull to the neutral position. So what's happening? It's going to the right side, and because of ligament pulling to the muscle are pulling to the neutral position. Mainly muscle are pulling to the neutral position. So it's rotating to the opposite side. Vertebra become like this. This I want to tell you, if you understand. कि जब भी किसी को स्कोलियोसिस होती है तो क्या होता है कि टेढ़ी हो रही है उसकी हड्डियां, वर्टिब्रा ऐसी होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे टर्न हो जाएगी. ये होता है. यानी दो चीजें होती हैं, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन. Side bending on one side or rotation on the opposite side. That is the scoliosis. Right? इसे कहते हैं scoliosis. इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है अभी, as per the acupuncture practitioner.
लेकिन फिजियोथेरेपीज के लिए, ऑस्टियोपैथीज के लिए, ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. Oh, it's going in the right side but turning on the left side. In the acupuncture, what we can do, the first treatment we do in the scoliosis, that is cupping, activating the area, activating the points. तो पहला हमारा जो स्टेप होगा वो उसे हम कहते हैं कपिंग थेरेपी. तो कपिंग थेरेपी का तो वीडियो मैंने ग्रुप में डाला है ना, पूरी हाउ टू डू द कपिंग ऑन द स्पाइन. Myofascial cupping course is going on. Many participants already there. Many participants are not there. Just I have put the video on the YouTube. And in that video, I have demonstrated that how to do the cupping on spine. Cupping and cupping massage. Have you seen anyone that video? देखा किसी ने? उसे देख लीजिएगा आप. देखिए डायनेमिक कपिंग मैंने दिखाई उसमें. और आज हमारी मायोफेशियल कपिंग क्लास में भी हमने, मैं अभी दिखाऊंगा नहीं आपको, बस मैं बता रहा हूँ. ये तो यूट्यूब पर मैंने डाली, यू कैन सी देयर, और आई विल पुट द लिंक इन द ग्रुप. सो दिस इज द कपिंग. I will show you only 30 seconds, not more than that. So we are applying the oil. I am doing fast forward, then we are putting the cups. Then we are putting the cups one by one in the entire spine. This video is already in the YouTube, and you can put dynamic cupping Hemant Sharma, you'll find it, and I'm sharing you the link in the group. लेकिन मेरे ख्याल से सबने सभी ने देखा होगा ना, देखा है. So the first step, do the cupping. The step number 2. The step number 2 for this scoliosis, we have to arrest the bend. So again, we will be putting the needle bilateral on 88.12, 13, and 14. We can do the acupuncture 2 days a week. And we can do the cupping once in 10 days. हम cupping एक बार कर सकते हैं 10 दिनों में. If we are doing dynamic cupping. But if we are doing normal cupping, just we are putting the cup and we are not moving the cup. अगर हम कप को घुमा नहीं रहे तो फिर alternate भी कर सकते हैं. Then we can do the alternately. बस कप लगाना है और 2-3 मिनट के बाद निकाल देना है. So 2 days a week, because if the patient is suffering with a scoliosis, you have to treat the patient slowly. आप कितना भी खींचातानी करो, आप उसे इतना जल्दी तो ठीक 3 दिन में तो आप स्कोलियोसिस ठीक नहीं कर सकते परमानेंटली. You need to work for longer duration to give the permanent relief. The third point is the very good point, that is DU26. The DU26 is the very, very effective points, and it is the point of spine, especially cervical spine. And DU26 is the near about, we are considering the distal point of spine. हमारी स्पाइन का डिस्टल पॉइंट है. वैसे तो अगर डीयू मेरिडियन की बात की जाए तो डीयू मेरिडियन हमारी पूरी स्पाइन को क्रॉस करता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल बोन, दैट इज DU1. हमारी टेल बोन में इसका जो पहला बिंदु होता है उसका नाम है DU1. Then DU meridian crossing the entire spine.
Coming here, that is DU26. Look at in this image. So the DU meridian will start from here. There is the DU1. It's crossing entire spine. हमारी पूरी की पूरी spine को cross करता है. This is the DU meridian. Then coming in the front, this is the DU26. इसके बाद भी हमारा DU27, 28 भी होता है, लेकिन तब भी हम DU26 को एक अंतिम बिंदु की मान लेते हैं. DU26 is the distal point of DU meridian. So we want to activate entire spine using this point. तो हमारा तीसरा बिंदु होगा डायनेमिक कपिंग 88.121314, then DU26. Now we will be using LI11 point. We are working for scoliosis. हम scoliosis पर वर्क कर रहे हैं. LI11, one of the great point. It will expel the bend, unwanted bend. It will expel the unwanted dampness. क्योंकि जब भी स्पाइन टेढ़ी होती है तो किसी कारण से टेढ़ी होती है. So LI11 will expel the bend, will expel the heat, will expel the humidity or dampness. So LI11 is a very good point. We always use for this purpose. For the patient who is suffering with the scoliosis, we do wide lateral needling. And finally, the distal point of UV channel, that is UV60. This is the protocol. ये हम प्रोटोकॉल अपनाते हैं, right? If we see the location of, अगर हम urinary bladder 60 की लोकेशन देखें, the urinary bladder 60 is a very great point. We can see here. So this is the location of urinary bladder 60 point. Urinary bladder 60 point is the distal point of urinary bladder meridian. It is lateral to the lateral malleolus. It is on the back side of the lateral malleolus. ये हमारे घुट एड़ी की हड्डी के पीछे होता है. This point is very good for neck pain and the lower back pain. अगर किसी को neck pain और lower back pain है, you can use the urinary bladder 60. We are using it as a distal point for the spine. फिर अलग अलग सिटिंग में आपको थोड़े से पॉइंट चेंज करना है. ये हमने एक पॉइंट लगाया. फिर अलग अलग सिटिंग में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट चेंज करना है. सपोज इन द वन सिटिंग यू डिड द कपिंग, देन पुटिंग द 88.121314 बायलैटरल, आपने पॉइंट लगा दिए. Then you're putting the DU26 point here. DU26 point, LI11 and UV60. In the second sitting, what we can do, you can do little changes. आप थोड़ा change कर सकते हैं. You do cupping only in the UV18 area, or you do guasha on the urinary bladder 18 area. आप या तो cupping करें या guasha करें. कहाँ पर? जहाँ पर हमारा urinary bladder 18 है. Actually, we have to treat 2 points for the scoliosis. हमें 2 पॉइंट को स्पेशली ट्रीट करना होता है, यूरिनरी ब्लैडर 18 एंड 20. हमें यूवी 18 और 20 को ट्रीट करना होता है, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर 18 is the point of liver and urinary bladder 20 is the point of spleen. So we do moxa on the UV20. Sorry, this is 21. So 20, हम UV20 पर मोक्सा करते हैं, और हम लिवर 13 को, हम UV18 को हम कपिंग या ग्वासा कर देते हैं. कपिंग और ग्वासा, राइट. सो इन दिस वे वी डू द एक्टिवेशन ऑफ दिस पॉइंट. तो हमारे पास सेकंड जब सीटिंग के लिए पेशेंट आया, तो हमने इस तरह से एक प्रोटोकॉल अपनाया कि वी डिड द कपिंग, वी पुट द कप फॉर 3 मिनट
On this area, maybe we can put the cup, 1 cup on the UB18, 1 cup on the UB20. Then हम UB18 को ग्वासा कर देंगे और 20 को मोक्सा कर देंगे. So because the flame is, जो flame होता है, flame play very important role. Flame. फ्लेम स्ट्रक्चर को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा करता है. फ्लेम इज रिस्पॉन्सिबल. आप देखो कि जब किसी को रिमोटॉइड आर्थराइटिस होती है, यहाँ पर फ्लेम जमता है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है. इन द रिमोटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट, द डिपोजिशन ऑफ द फ्लेम and finger is getting deformed. So now we will do moxa here. Now alternately we will activate the spine by putting the SI3, UB65, GB31 and DU26. In the second sitting we can do this. First sitting and 1 day break, or we can do sitting 2 sittings in a week. In the second sitting we can do this. Second sitting. In this sitting we are having SI3, which is the master point of spine. UB65, the distal point of UB channel. DU26 is the distal point of spine. And gallbladder 31 is very good point for expelling the bind, and this point is located here. अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, so where my middle finger touching, if I am standing like this, so where my middle finger touching here, that is the location of gallbladder 31. वो हमारे gallbladder 31 की लोकेशन. gallbladder 31 एक ऐसा बिंदु है, इसकी अगर मैं आपको इसके गुणगान गाना चालू करूं तो एक दिन भी कम है, इतना इफेक्टिव पॉइंट है gallbladder 31. Especially this point is very good for pain relief, for paralysis, for headache, top to bottom pain anywhere in the body we can release with the gallbladder 31. Gallbladder 31, one of the great point, very, very effective point. So the gallbladder 31 has been considered as a point of bind. इसे बिंड का पॉइंट कहते हैं. ये बिंड को बैलेंस करता है, सिंक्रोनाइज करता है, एक्सपेल करता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को फेशियल पैरालिसिस हो गया, gallbladder 31. फुल बॉडी पैरालिसिस, gallbladder 31. माइग्रेन हेडेक, gallbladder 31. नेक पेन, gallbladder 31. अपर मिडिल थॉरस, लोअर बैक पेन, gallbladder 31. Scoliosis, gallbladder 31. So gallbladder 31 is one of the great point. It's work in entire body, right? इतना करना है आपको. देखो थोड़ा सा आपको नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, कभी पेशेंट आएगा तो आपको लगाना होगा इस तरह से. But these are the proven protocol, and many person are using these protocols. It's clear? Entire protocol is clear? Okay.